Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear friends. I'm back again with a very important session for all my students who are working in some or the other field and they aim to crack GATE or any other competitive exam while being in a job. जॉब करते वक्त अगर आप भी सोच रहे हो कोई ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम क्रैक करने का, तो बेटा ये सेशन एकदम आपके लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। इसीलिए इसको एंड तक बहुत ध्यान से देखना। आई विल टेल यू द टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट्स, हाउ द वर्किंग प्रोफेशनल्स कैन मैनेज देयर टाइम व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर गेट। So now beta, what are the major challenges for working professional? Full-time job consumes lots of time and more than time it consumes your energy, है ना? Though we may quantify that you are working in a job, let us say 8 to 10 hours, still 14 hours are left. But in those 8 to 10 hours, they are draining your entire energy. So for the remaining 14 hours, being very intense and practicing or preparing becomes very difficult. Now, GATE requires consistent preparation, and with job, maintaining a consistent schedule becomes difficult because sometimes in the job, you may be required to deliver a project quite quickly. जॉब में हो सकता है कोई डेडलाइन अप्रोच कर रहा हो, आपसे जल्दी प्रोजेक्ट की डिमांड की जाए, आपके टास्क की डिमांड की जाए, एंड दैट टाइम द जॉब में बिकम रियली हेक्टिक एंड इट बिकम्स अ लॉट डिफिकल्ट टू डेडिकेट टाइम टू द गेट प्रिपरेशन। अब गेट में पहले एक चीज समझ लीजिए बेटा, गेट इज नॉट लाइक जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE, इट इज वेरी डिफरेंट। In JEE beta, your brilliance matters, your mind matters, your IQ matters. But in GATE, your work ethic, your strategy, your commitment, consistency, dedication, these things matter more than your technical brilliance. ठीक है? तो आप टेक्निकली ब्रिलियंट नहीं है, बट आप एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, आप एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट हैं, आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, so you have a better chance of cracking an exam like GATE as compared to any other aspirant. Okay, so you need to balance your job and the GATE preparation. So you need to have a smart strategy and not compete in terms of hard work with the droppers. ठीक है? तो आपको बेटा आपकी सिचुएशन के हिसाब से चीजें बेस्ट करनी है। आपको ये नहीं देखना कि जो ड्रॉपर है वो 10 घंटे 12 घंटे इन्वेस्ट कर रहा है, मैं कैसे कर सकता हूं। Do not replicate anybody. Think what you can do best, how you can make best of your situation. Because beta, we cannot change the circumstances, we cannot change our situation. What we can do is we can make the best out of any given circumstances, any given situation. तो आप अपने हालात नहीं बदल सकते, नौकरी नहीं बदल सकते अभी, लेकिन आप ये जरूर बदल सकते हो कि उस नौकरी के साथ उन हालातों में आप अपना कैसे बेस्ट आउटपुट निकालते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, यू मस्ट हैव अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। मेनी स्टूडेंट्स फेल हियर, they create a very hectic timetable and then they get demotivated when they are not able to follow that. So timetable should be realistic. That is, suppose I am giving 10 hours to job. Now in the remaining 14 hours, if you think you can churn out 6 hours, that is theoretically possible but practically not so much possible. So it's better to dedicate like 2 hours in the morning or 2 to 3 hours in the evening, because 6 hours is very tight. You need to sleep for 6 to 7 hours a day, then you will be left with just 1 hour. So calculating all these things on paper seem very easy, but practically some amount of time will be wasted. We can't be 100% efficient, right? So that thing you have to keep in mind, that your timetable should be relaxed enough so that you don't get demotivated while following it and you do not get too much pressurized. टाइम टेबल ऐसा मत बना लेना कि आपके सिर पे इतना प्रेशर क्रिएट हो जाए कि आप फॉलो भी ना कर पाए। टाइम टेबल थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। देन बेटा, first you must understand, while being in a job and having just 6 to 8 months of preparation does not cut it. You might not be able to complete the entire syllabus. So it is very important to prioritize subject. That is the second mistake many students do. They come to my AMA session and they tell me, sir, we have covered measurement. It is just for 2 marks. Why did you waste 40-50 hours there? Instead of that, you could have done EMFT, you could have done one chapter of machines. It would have fetched you more number of marks.
So you have to be smart, beta. Just covering subject after subject, any random subject is not going to help you. You must have a clear understanding what topic has what weightage, which topic is more important, which is less important, because time is a very precious resource and you have to use it wisely. टाइम आपके पास बेटा लिमिटेड ही है, टाइम आपके पास भर भर के नहीं है. उस टाइम को आप इन्वेस्ट कहां कर रहे हो, आपको ये सोचना है. थिंक ऑफ इट लाइक दिस, दैट टाइम इज मनी. So which mutual fund, which stock you are investing your money in will define the return on investment, will define how much profit you make. Just investing time blindly does not make you profit, does not get you the desired result. तो आपको अपना टाइम बहुत दिमाग लगा के बेटा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, अंधाधुंध टाइम नहीं है. यू आर नॉट अ ड्रॉपर, सो यू डोंट हैव ample amount of time. You have very small amount of time, so you have to be very specific and focus on quality, beta. Always focus on quality. Don't go after increasing the number of hours. Number of hours do not matter in the final result. What matters is how much you learnt in those hours. If I'm sitting for 6 hours and I'm thinking about somebody in my life, my ex or somebody in a relationship, then those 6 hours are wasted, beta. You must be completely focused on the content in front of you, whether a teacher is teaching you, whether you are solving a question, your 100% focus should be there. Not thinking about a deadline approaching in a job, not thinking about what your manager told you, not thinking about if somebody scolded you or behaved badly with you in your job. इन चीजों पे फोकस नहीं करना है. These things are temporary, beta. Tomorrow, if you reach a good position, all these things will go away. So always remember, focus on the things that matter. These day-to-day things are not going to matter in the long run. These are just small distractions around you. These are your test, whether or not you can persevere, whether or not you can focus. And you keep on failing these small tests and you think GATE is just a test of knowledge. GATE बेटा नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपके कैरेक्टर का टेस्ट है. वो ये टेस्ट करता है कौन बच्चा कितना परसिवरेंट है, कौन बच्चा कितना फोकस्ड है. क्या लाइफ में हल्का अप एंड डाउन होने से आप डेविएट हो जाते हो? अगर हो जाते हो तो भाई आज ही छोड़ दो गेट की तैयारी. Doesn't make sense to prepare for an exam like GATE, which tests your character. So show your character, show that these small things do not matter in life. And no matter what happens outside, when you are sitting in front of your system, in front of your book, you will be fully focused on your preparation. Nothing else matters that time. You should enjoy your preparation time. You should enjoy learning the subject. Whenever you are sitting to learn something, your mind should say, okay, today I am going to learn something new. Today I am going to improve my skill. आज मजा आने वाला है, कुछ नया सीखेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, खुद को ग्रो करेंगे. अगर इस माइंडसेट से बैठोगे तो ही बेटा गेट के अंदर कुछ अच्छा कर पाओगे. नाउ डेली रूटीन बेटा, ऑलवेज टेक आउट टाइम अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग्स आर वेरी काम, very soothing. There is no noise outside. There is nothing. Nobody is going to call you. Nobody is going to disturb you. So those early morning 2-3 hours are very important. And the evening, once you are tired, you can focus on revision. Or if you feel more comfortable, practice in the morning, and in the evening you can focus on the theory. Because while solving problems, you are going to learn the maximum amount of concepts. प्रॉब्लम सॉल्व करके ही कॉन्सेप्ट सुधरता है. तो आप प्रॉब्लम्स उस टाइम पे सॉल्व करें जिस टाइम पे कंफर्टेबल लगता है. इफ यू फील इवनिंग यू आर कंफर्टेबल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, देन मॉर्निंग थ्योरी, इवनिंग क्वेश्चंस. इफ यू फील मॉर्निंग यू आर कंफर्टेबल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मॉर्निंग प्रॉब्लम्स, इवनिंग थ्योरी. इट्स अप टू यू. Like when I was doing a job from 2013 to 2014, I used to solve problems during my office hours. And during my basically home hours, or when I was at home, I used to study theory. It's completely up to you. So weekdays you can dedicate for theory and PYQs, and weekend should be long session. Long session in total, not each sitting. Like you can sit for 2.5 hours, 3 or 4 times a day. So it becomes a long session. अगर आप 2 hours के 3 या 4 सेशन बना लोगे तो वो अपने आप ड्यूरेशन ओवरऑल लॉन्ग हो गया.
And always beta keep some time out for recreational activity on one weekend, like either on a Saturday or Sunday. Keep some time reserved when you will be watching a movie, when you will be relaxing, because that way your mind gets rejuvenated and it helps you focus for the next week. तो आपका वीकेंड में कोई ना कोई एक छोटा 2 या 3 घंटे का कोई ना कोई प्लान होना चाहिए जिससे आपको अगले हफ्ते के लिए मोटिवेशन मिले, अदरवाइज यू विल बर्न आउट. ओके, so short notes and formula sheets are very important. Either you can make it handwritten or you can take a screenshot of the important concepts from the notes and paste it in a Word file. So always remember, be smart. And not only you have to work hard, you have to work smart. Your time matters. So do not waste time in mechanical work. Invest time where it makes sense. And where does it make sense? In problem solving. सबसे ज्यादा समय प्रैक्टिस में जाना चाहिए, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा स्किल सुधरेगी और वहीं से रैंक आने के चांसेस बढ़ेंगे. इफ बेसिकली जॉब people should always go for recorded videos, and they should watch recorded videos like at 1.5x or 2x, so that way you can cover more syllabus in less time. And daily you can keep like 1.5 hour for assignment or PYQs, and on Sunday you can keep a 2-hour slot for a test. Okay, संडे को 2 घंटे टेस्ट को डेडिकेट कर दो, डेली प्रैक्टिस में या तो असाइनमेंट या पीवाईक्यू के लिए टाइम रिजर्व कर लो. एंड आफ्टर गिविंग अ टेस्ट ऑन संडे बेटा, मेक श्योर यू सिट फॉर 1 hour एंड यू एनालाइज योर मिस्टेक्स. यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, बिकॉज इन एग्जाम यू कैन नॉट बी 100% prepared, but make sure even if you have prepared for 70 marks, your accuracy is very high, then you can get a decent rank. आप ये मत सोचिए कि ड्रॉपर 100 मार्क्स की तैयारी कर रहा है तो मैं भी 100 की करूं. आप ये सोचो, अगर ड्रॉपर 100 की तैयारी करके 65 लाता है तो मैं 70 की तैयारी में 65 ले आऊं, तो आपका रैंक तो सेम आएगा विदाउट गेटिंग द सेम काइंड ऑफ एफर्ट. तो आप एक्यूरेसी को 90% के ऊपर रखने की कोशिश कीजिए. ओके, नाउ बेटा ऑन वीकेंड्स यू कैन कवर द पेंडिंग सिलेबस, एंड इफ एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक यू कैन डेडिकेट इट फॉर रिवीजन. Sunday you can dedicate for test series and analysis, and always create a weekly target. Like on Sunday evening you should have a target in mind for the next week. Make sure you hit that target. Even beta, I am a teacher, my target is always clear for the next week. Next week professionally what I have to do, personally what I have to do, what are my targets in terms of teaching, business management, in terms of family. तो माइंड में क्लैरिटी रहना चाहिए कि अगले हफ्ते क्या क्या अचीव करना है, कितनी चीजें आपको कवर करनी है, आप अभी कहां स्टैंड करते हो और अगले वीकेंड में आपको कहां पे स्टैंड करना है. एंड कीप हिटिंग दोस वीकली टारगेट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज, योर प्रिपरेशन विल गो बेटर. एंड बेटा ऑलवेज थिंक ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर टाइम. लाइक व्हेन यू आर सिटिंग आइडल, यू कैन जस्ट गो थ्रू योर शॉर्ट नोट्स, ओके, और लिसन टू ऑडियो नोट्स इफ यू हैव एनी. अगर आपने कोई ऑडियो नोट्स बना रखे हैं, कुछ बोल रखा है, जैसे यू कैन इवन डू दिस टेक्निक इन योर मोबाइल फोन. यू कैन रिकॉर्ड वॉइस नोट्स, ओके, विच एवर कॉन्सेप्ट फील इंपॉर्टेंट टू यू. लाइक यू कैन एक्सप्लेन टू योरसेल्फ अबाउट दैट कॉन्सेप्ट, अबाउट दैट फॉर्मूला और एनीथिंग इंपॉर्टेंट, एंड कीप दोज वॉइस नोट्स इन योर फोन एंड यू कैन लिसन टू देम व्हेनेवर यू फील लाइक. तो अगर आप खुद को कोई चीज एक्सप्लेन करोगे तो वो बहुत सिंपल हो जाएगी, वो बहुत आसानी से आपको समझ आएगी और वो वॉइस नोट्स आपके पास हमेशा रहेंगे. एंड व्हेन यू आर टेकिंग ब्रेक एट वर्क, लाइक इन योर जॉब ऑल्सो, यू कैन कैरी योर फॉर्मूला शीट, यू कैन कैरी योर शॉर्ट नोट्स. So whenever you find even half an hour free in your job, you can revise the formulas or you can carry the screenshot of the assignments or PYQs in your mobile phone. You can solve some problems. Like what I used to do beta in my office laptops, I used to save the photos of the question from the book. मैं क्या करता था, बुक के एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन की फोटो खींच ली. अगर एक चैप्टर 8 पेज का है तो 8 पिक्चर्स मैंने क्लिक कर ली. अब जब भी मेरे को वर्क में टाइम मिलता था, मैं क्या करता था, वो फोटो खोला, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया, आंसर की मैंने एक जगह लिख ली कि मेरे आंसर क्या क्या आ रहे हैं, घर जाके बुक से मैच कर लिया. और अगर आंसर की अवेलेबल है तो उसको भी कैरी कर सकते हो, हैंड टू हैंड चेक कर सकते हो. तो बेटा कैरिंग अप शॉर्ट नोट्स और कैरिंग सम सेट ऑफ क्वेश्चंस will help you basically utilize your time during the job, and micro learning keeps you connected daily
Micro learning means learning small concepts, learning short notes, learning formulas will keep you connected with your syllabus. And as I told beta, always make sure that you are getting 6 to 7 hours of sleep, and dinner should be light. Dinner should never be heavy, क्योंकि डिनर हैवी होगा, ब्लोटिंग होगी, अगले दिन तबीयत खराब होगी, आप एक्टिव नहीं रह पाओगे. So make sure you have a balanced nutrition where you include proteins in your diet. Carbs are also balanced, fats are also balanced, everything is balanced. Do not eat junk food, do not eat heavy food, because then your energy will go down. And keep on taking short breaks. Do not sit continuously for long duration. Otherwise, your mind will get saturated and you will get burnout. And you can follow somebody who has a similar story or similar situation to you. Like if you found some topper interview who was in the same position as you and you found it really inspiring, so you can watch that video to get motivated. And always remember, consistency will always beat intensity. So even if you are dedicating 4 hours a day, it is much better than dedicating 8 to 10 hours a day and then doing nothing the next day. एक दिन 8 से 10 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन पढ़ के सो रहे हैं, उससे बेहतर है डेली 4 घंटे आप इन्वेस्ट करो. Be very, very consistent. Invest your time like you are investing money in a SIP. It goes regularly rather than investing everything at once. Invest it wisely. Okay. And always, beta, avoid overcommitment in office. Do not like to impress your manager. Do not keep on taking more and more work. Impress नहीं करना है बेटा. In corporate, it is very important to seem to be busy rather than actually being busy. Corporate में आपको busy दिखना है, आपको ये दिखना है कि आप बहुत काम कर रहे हो, आपको छोटे से छोटा काम चमकाना है. That is very necessary to earn well, not actually working well. Because if you are really, really hard working, everybody is going to take advantage of you. The work in a corporate never finishes, so don't try to finish the work. Rather than that, be consistent, be very noticeable. Your effort should be very, very noticeable and you should seem very busy. And reduce your distractions. Beta, already you are overburdened with job and gate preparation. Do not bring any third thing to the table like social media or TV. Already आपके पास बहुत जिम्मेदारी है बेटा, कोई तीसरी चीज मत लेके आइए. And communicate your goals with family or colleagues, because then it becomes a commitment. When you tell somebody else that I'm going to do it, then you will feel guilty if you do not do it. So always better to communicate rather than keeping it within yourself. अपने अंदर रखने से अच्छा है किसी को बोल दो, क्योंकि जब वो पूछेगा हुआ या नहीं हुआ, तुमने ऐसा बोला था, तो एक जिम्मेदारी बन जाती है पूरा करने की. And always say no to unnecessary tasks. Always remember two things. You have two responsibilities, your job and your preparation. If there is anything which is not related to any of those, or I can say third thing is family, learn to say no, है ना? If it is not helping you achieve either any task in the job or your any task in your preparation, it is not necessary. Simple सी बात है. So 2-3 hours per day, okay, make it 4 hours if possible, 8 to 10 hours on weekend. So almost like how many hours will be there? 4 into 5, 20, 20, 20, 30. Almost 25 to 30 hours a week. Strictly for the timetable for 8 to 10 months. Now we have 5 months, so focus on 5 months. And be very smart. Smart work is better than hard work. And remember to believe in yourself. This is easier said than done. But do not doubt yourself. खुद पे भरोसा रखो भाई. कहना आसान है, करना मुश्किल है. लेकिन जब भी सेल्फ डाउट हो तो किसी और तरफ अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लो. बट ये बार बार मत खुद को बोलो कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो आप बोलते हो वही सच हो जाता है. फिर कितनी भी मेहनत कर लो नहीं हो पाएगा. पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है. अपनी सिचुएशन में बेस्ट अपने को करना है. रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो. नीचे आपके हाथ में आपका कर्म है, आपके हाथ में आपका एफर्ट है, उसको ऑप्टिमाइज करो. बाकी रिजल्ट ना आपके हाथ में था ना कभी होगा. ओके, so that's it from my side. And important announcement beta, our offer for teachers day will expire tonight at 12, and make sure that you avail the offer before it expires. So we are giving you 60% off on the live plus recorded batch for GATE YT 60. We are giving you 30% off on all the recorded courses for GATE and AJE using EB 30.
50% discount on the subject wise courses analog, maths and power system using YT50. तो recorded पे 30%, EB30, live plus recorded जो गेट का है 60% ऑफ, YT60, और इसके अलावा आपका 50% ऑफ सब्जेक्ट वाइज कोर्स एनालॉग, मैथ्स और पावर सिस्टम यूजिंग YT50, टेस्ट सीरीज पे 50% ऑफ यूजिंग अंकित ESE. So that's it from my side. I'll see you in the next video. I hope this video helps a lot of you. Thank you. Have a great day.